बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you people, my family? Today we are covering part 4 of Authenticate User. So in this we assign two form for Omar user, one from setup form dashboard and one from transaction form dashboard, job history and job employees respectively. आज हम चौथा हिस्सा कवर कर रहे हैं अपने ऑथेंटिकेट यूज़र का और उसमें हम दो फॉर्म्स को हाइड करेंगे। पिछले हिस्से में हमने हाइड किया था सेटअप यहाँ से पेज नेविगेशन से। आज हम यहाँ से हाइड करेंगे सेटअप फॉर्म डैशबोर्ड और ट्रांजैक्शन फॉर्म डैशबोर्ड से। क्लिक ऑन शेयर्ड कंपोनेंट पे क्लिक करें। Now, sorry, go to page number 3। पेज नंबर 3 पे आए। Now click on job history region। job history region पे क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन नीचे आते रहिए। and select PL SQL Expression from server side condition। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए और PL SQL Expression सेलेक्ट करें, सर्वर साइड कंडीशन फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन में से जो कि सर्वर साइड कंडीशन की हेडिंग के अंदर आता है। फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन अंडर सर्वर साइड कंडीशन डिफाइन PL SQL एक्सप्रेशन। और बता दीजिए कि आपका PL SQL एक्सप्रेशन क्या होगा। उमर को नहीं नज़र आने चाहिए। It will be hide from Omar, as you can see here। Job history interactive grid is appearing. Now hit Alt F8 and reflect the changes। Alt F8 दबाएं और changes महसूस करें। ठीक है। Now it has hide from Omar user। Omar के यूज़र से ये हाइड हो चुकी है। Repeat same process।
Come to page number 4. Jobs and employees. Now you see here, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं एम्प्लॉय जॉब्स और जॉब्स एम्प्लॉय. इस दोनों रीजन में हम ये काम करेंगे. We should do the changes for these two regions. Here alter and effect and reflect the changes. Alter effect दबाएं और तब्दीली महसूस करें. Okay, this is it. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.